Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to perform Cambridge IGCSE Information and Communication Technology Paper 2 Presentation of Feb March 2022 to 1. Paper 2 and the variant is 1. Okay, we are going to perform task number 6 is presentation. You are going to create a short presentation. All slides must have a consistent layout and formatting. Okay. Create a short presentation of 9 slides using the file m2221 press.rtf. Okay, we have to open this file in the Power Presentation. Go to the Home tab, New Slides, and Slides from the outline. Okay, and the file folder is desktop video Feb March, and the file name is m221 press. The first task is you have to delete the blank slide. Okay, we have to 9 slides, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 slides. Change the layout of slides 1 to the title layout. Very simple, just go to the layout, select the slide 1 and go to the layout and select the title slide. Okay, the next step is on slide 1 enter your name after the text overview presented by. You have to write your name overview presented by. Okay, the next part is use a master slide. Go to the view tab and click the slide master and click the slide number 1. This is the slide master. Automated slide numbers on the top right, your name, center number and candidate number. Automated slide numbers on the top right. You have to place the slide number on the top right. Just go to the insert type and header and footer, slide number and footer में name place कर दें, and the center number is 000 and candidate number is 00. Apply to all, and I have to place the slide number on the top right. This is a slide number on the top right, and this is a slide number. Okay, and मुझे इसमें डेट की ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट करते हैं और व्यू में चेक करते हैं कि क्या हमारे पास नॉर्मल स्लाइड्स आ रही हैं. गो टू द नॉर्मल स्लाइड्स और देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे पेज नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं. ओके फाइन, और इसमें हमारे पास फुटर भी डिस्प्ले हो रहा है. The next is delete the slide with the title suitable applications for HDDs. हमें इस स्लाइड्स को डिलीट करना है HDD ड्राइव्स को नाम से, जो है SSD. I think so. This is a slide. Suitable applications. No, this is a suitable application for slides. Just click that right click and delete the slide. Okay, the next step is on the slide with the title consider your storage needs, demote to the next level all the points that follow the text is it. Okay, consider your storage needs. Consider your storage needs, and this is the text is it. और हमें इन टेक्स्ट को क्या करना है, डिमोट करना है. Just select this text and go to the increase list level. तो यहाँ पे आके इसका डिमोट लेवल कर देंगे और इसका हम इसका क्या कर देंगे,
बुलेट्स भी चेंज कर देंगे। तो बुलेट्स के लिए हम कस्टमाइज बुलेट्स पे जाके लेट्स सपोज हम इसको ये वाला बुलेट सप्लाई कर देते हैं जिसको हाइफन्स का नाम देते हैं, ये इसको डीमोशन का नाम दिया जाता है। Okay, the next point is use the data in the file M2221 sales। हमें ये वाली फाइल ओपन करनी है वर्ड एक्सेल के अंदर और उसके अंदर वर्टिकल बार चार्ट क्रिएट करना है और कंपेयर करना है नंबर ऑफ सोल्ड्स फॉर द सेल्स ईयर्स 2020 and 21। Okay, go to the file and open the 221 sales 221. This is the file and we have to create the vertical bar chart। Okay, just select this data of 20 and 21 and go to the insert tab and click the vertical bar chart। ये हमारे पास टेबल में डाटा आ चुका है and now the series 1 and series 2 नहीं हमें चाहिए बल्कि हमें 20 and 21 का डाटा चाहिए। तो सेलेक्ट डाटा करके आप लोगों ने इसको रिमूव कर देना है या इसको एडिट कर दें। इसको एडिट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 20 आ जाएगा और इसको ओके कर दें और इस सीरीज़ के लिए भी इसको क्लिक करने के बाद एडिट किया जाए तो हमारे पास यहाँ पे 21 का डाटा होना चाहिए, इसको ओके कर दें और ये हमारे पास 20 और 21 का डाटा आ चुका है। और इसके बाद हमें इसकी कैटेगराइज भी चाहिए तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें और सेलेक्ट डेटा कर लें। सेलेक्ट डेटा में हमें इसको एडिट करना है और हमें इसमें ये वाला इसमें डाटा चाहिए क्योंकि इसमें वो बता रहा है कि आपको जो सोल्ड फॉर द सेल्स हैं वो हमें चाहिए। तो आप इसको ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे डाटा डिस्प्ले हो रहा है। ओके फाइन। द नेक्स्ट स्टेप इज लेबल द चार्ट एज फॉलोज। हमें इसका क्या करना है, चार्ट का टाइटल ऐड करना है और उसके लिए हमें सेलेक्ट का टूल इसको सेलेक्ट किया जाए और राइट क्लिक करें तो कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद जो चार्ट का टाइटल है वो ऐड कर दें। चार्ट टाइटल जस्ट डबल क्लिक एंड पेस्ट। डन। द नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यू एक्सिस यूनिट सोल्ड्स। इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लें एंड हमारे पास जो यूनिट सोल्ड्स हैं और इसके बाद कैटेगरी एक्सिस टाइटल टाइप ऑफ कनेक्शंस यूनिट सोल्ड्स में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास एक्सिस आ जाएगा, एक्सिस टाइटल। और यहाँ पे हम यूनिट सोल्ड्स और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इसका डाटा टाइप्स एंड कनेक्शंस। These are the types and connections और यूनिट सोल्ड्स आ गया। इसके बाद ओनली द डाटा वैल्यूज एट द टॉप ऑफ ईच बार। हमें डाटा को डिस्प्ले कराना है ईच बार के ऊपर। जस्ट आपने क्या करना है, इन बार्स को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप प्लस पे चले जाएंगे और यहाँ पे आप डाटा लेबल्स कर देंगे। तो ये डाटा लेबल्स करने के बाद हमारे पास दूसरी बार्स में भी होना चाहिए। तो डाटा लेबल्स करने के बाद हमारे पास ईच बार के ऊपर डाटा जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो गया। A legend to show the years. Okay, fine. Place the chart to the left of the bullet on the slide with the title Sales Analysis of 2021। हमें इसके ऊपर जाना है। पहले हम इस चार्ट को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कॉपी एंड गो टू द फाइल 2021 और इसमें हमें लेफ्ट साइड पे इसको प्लेस करना है। इसको आप राइट पे ले जाएंगे और यहाँ पे आप कंट्रोल वी कर देंगे तो ये आपके पास आपका चार्ट प्लेस हो गया। फाइन। Add the following text as a presenter speaker notes for the slides with the title Sales Analysis 2021। हमें इसके नीचे जो है ना प्रेजेंटर स्पीकर नोट्स ऐड अप करने हैं। जैसे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद आप व्यूज़ के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नोट्स पेज और यहाँ पे आप इसको प्लेस कर देंगे। कंट्रोल वी करने के बाद ये आपके पास प्रेजेंटर नोट्स आ गए।
प्रिंट ओनली द स्लाइड्स आर प्रेजेंटेड नोट्स। जस्ट आपने क्या करना है, इसको यहीं से ही कंट्रोल पी कर लें या प्रिंट पे चले जाएं और कंट्रोल पी करने के बाद आप नोट्स पेज या आपके पास नोट्स पेज आ जाएगा और इसको प्रिंट कर लीजिएगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज save the presentation, print the presentation as handouts in landscape orientation with 4 slides on the page। ओके 4 पेजेस चाहिए और ये हमारे पास 4 पेजेस आ गए और ओरिएंटेशन इसकी क्या है, लैंडस्केप होनी चाहिए। तो जस्ट आप इसको प्रिंट कर लेंगे। थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज़।